अभी मैं हूँ मुंबई का बांद्रा पे। बांद्रा ऐसा एक जगह है जहाँ पे सबसे बड़ा बड़ा स्टार, सबसे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जो है बांद्रा पे रहता है। तो बांद्रा पे घूम रहा था तो छोटा छोटा भाई मिल गया। क्या नाम है तेरा? बोल। कृष्णा। और तेरा? शौर्य। स्कूल में जाता है क्या नहीं? यहाँ पे पूरा साइकिलिंग कर रहा है। हाँ? चल चल चल। हाँ हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सपनों का शहर मुंबई पे आप लोगों को स्वागत है। अभी मज़ा आने वाला है वीडियो में। पठान करते करते पठान मूवी देख देख के शाहरुख खान का घर के सामने आ गया, पठान के घर के सामने आ गया। तो मेरे पीछे जो आप लोग घर देख रहे हैं शाहरुख खान का घर मन्नत। काम चल रहा है, कालार का काम चल रहा है अभी। तो लोग, एक तो लोग मुझे दिखाई दे रहा है, वो लोग कालार का काम कर रहा है। अभी मज़ा आएगा। मन्नत के सामने इतना लोग है, सब लोग आके फ़ोटो खींच रहे हैं शाहरुख खान का घर के सामने। तो मन्नत के सामने लोग जो है फ़ोटो खींच रहे हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। भाई आप कहाँ से हो? हम है कलम्बोली से। शाहरुख खान को देखने के लिए आए? हाँ, यस यस भाई मैं भी शाहरुख खान के घर देखने के लिए आया। आई एम फैन सर शाहरुख खान है। मैं असम से आया। असम से। कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत मस्त लग रहा है। पठान पिक्चर भी एक नंबर है। देखा ना आपने? अरे बहुत कैसा लगा बोल दीजिए। एकदम फाड़ दिया एकदम। हाँ। भाई आप कहाँ से आए? यही पे लोग मतलब सारा दिन लोग यहाँ पे रहते हैं ना? घर के सामने फोटो खींचते हैं। जी जी भाई, आपका नाम क्या है? सोहेल। और आप लोगों का नाम बोल दीजिए आपका। हमारा नाम है शोएब। मेरा नाम है शोएब। मेरा नाम है जुनैद। मेरा नाम है जुनैद। जुनैद भाई। और आपका? नावेद। हाँ, सामने आ जाइए ना। नावेद भाई। हाँ। और फिर से एक बार हम शोएब भाई। और मैं हूँ सोहेल। मेरा नाम है आवेश भाई। हाँ, आई एम बिग फैन सर। आई एम बिग फैन। बिग फैन। आई एम बिग फैन। SR के क्या हम बिग फैन। कितना प्यार करते हैं एक बार बोल दीजिए। बहुत सारा 100% 100%। 100% प्यार करते हैं हम लोग। यहाँ पे निकल रहे हैं ना शाहरुख खान? कब निकालेगा? ये उनके बर्थडे के टाइम में निकलते हैं। और ऐसे नहीं निकलते ना? ऐसे नहीं। चिप्पड़ चढ़ाओ। भाई लोग जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहा है। हाँ, सब्सक्राइबर कर दिया। ठीक है भाईजान, थैंक यू। हाँ, मेरे को भेज दे वो आईडी। तुम भी कर रहे हो क्या? लिंक मेरे को भी भेजो। शाहरुख खान, वी लव शाहरुख खान, We love शाहरुख खान। ओ भैया, शाहरुख खान के घर में काम करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? एकदम अच्छा लग रहा है। जोर से। एकदम मजा आ रहा है भाई। मिला है आप कभी? संडे के दिन मिले ना? हाँ हाँ। यही संडे के दिन चलते हो बरोबर। कब निकलता है? संडे को। संडे को। इतना अच्छे जगह पे रहता है शाहरुख खान। एकदम समुंदर के सामने घर है। घर से एकदम समुंदर दिखाई देता है। वाओ, आर्टिस्ट लोगों का कुछ बात ही कुछ अलग है, क्या बोलूँ। समुद्र का मजा ले रहा हूँ और कौन खा रहा हूँ। घूमते घूमते आ चुका हूँ मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने। गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहता है भाईजान सलमान खान। सलमान खान का घर के सामने बैठा हूँ मैं अभी। शाहरुख खान का घर से 1 किलोमीटर का अंदर ही भाईजान का घर है, सलमान खान का घर है।
इसी हॉस्टल पे मैं स्टे कर रहा हूँ और हॉस्टल का नाम है क्रेजी सोलो हॉस्टल। काफ़ी मस्त प्लेस है, अच्छा वाइब है। आई मीट विथ सम न्यू पीपल। तो where are you from? I'm from Portugal. How long has been around in India? This is not my first time in India. I have been here 7 years ago and I have been here for 6 months. And I traveled all around India. And right now I came to India on the 10th of December, so around 2 months ago. And I've been traveling mostly Kerala, but somehow I'm here in Bombay. How was your experience in India? Share with my audience. Oh, it's a whole story about. I can write a book about this experience. So you have to ask me very particular questions because if I'm gonna start explaining about my experience in India, it can go for hours and hours. A little bit. So I find this question the most difficult because my experience in India was not as a tourist, but rather as like a human going back to the roots of whatever we are. As I am myself as a Hindu, I have been experiencing Hinduism, experienced my connection with God, and why it makes so much sense for me to be here. So it's very different than going and taking a rickshaw and going to touristic places and buying lots of stuff here. That's not what I'm doing here. And I think my experience with India can be described in many different ways, but there's one I specifically like. There's this book which is very famous. It's called Shantaram, and actually this is the reason why I'm in Mumbai. But there was one line that I remembered very, very well, is that the only proof that the God exists is the generosity of the poor. Because it makes absolutely no sense that the poorest people are actually the most generous one, and that's what my experience was with India and with all over the world, actually, not only India. But when I came here 7 years ago, I had no money. I was very, very poor, and I was absolutely burned out. I was in a very bad place mentally, and I came here and survived on $100 a month, and I was working as a cook in Goa. I was taking care of horses in Rajasthan. I was sleeping on the streets, sleeping in random people's houses, helping people in different places just to being able to sustain myself, doing massages and for donations, and just trying to make a living over here as much as it was possible for me that time. But because I had no money and because I met people I met exactly because I had no money, it was a very specific kind of experience that I had with India, because I would never meet those people if I would be rich. I would never meet those people if I would have that little amount of money to be able to stay in my own room, or not to be asking for help on the streets. And that made me go very, very deep into relationship with India and how close it is to my heart. So the answer to this question is very long, and I can't really answer that. But I found out that every state and every place in India, every house and every road and every neighborhood and community differs so much that even if I live in one community for a month, I would never be able to cover the whole India and understand it completely, just because of the diversity this country has. And I'm really envied, to be honest, at how much of a diversity this country